Hey, thank you so much for tuning in to a new episode of Cut to Movies with Vivek and Viru. Just before we dive in, we'd like to give you a disclaimer that this episode is filled with spoilers. So please do watch the film first. Unless, of course, you don't have an issue with spoilers, in which case. Hello and welcome to another episode of Cut 2 with Vivek and Viru. And today we are back in India. And after doing a couple of films from the south, we are now in the west of India. It's our home state, Maharashtra. And it's a film that has got a special mention at the National Awards. Plus, it is the first Marathi film commissioned by Amazon Prime. Vivek, tell us about the movie. Yup. Today we are going to talk about this film called Picasso. It is a 2019 film, almost like a love letter by debut director Abhijit Mohan Barang to the not-so-spoken art form of Dashavatari. It was the single most prominent source of entertainment for people in the Konkan region of Maharashtra before the emergence of television. This film delivers its message subtly through a heartwarming bond on art shared by a father with his son. Yeah, and just before we start discussing about it, let us introduce our guest today. It's one more colleague of ours, like we had Monish and Siddharth here, who were ex-colleagues from Experience Commerce. Here's Nikhil, who is actually a man who wears several hats. He was an entrepreneur, then came to Experience Commerce, led the development team, went on to do other things. He also runs a very, very successful Marathi website called Bobatha, and he also runs his podcast called Ghotalyat Ghotala. Right, Yeah, Nikhil? yeah, you Tell us promoted more about it. Yeah, yourself and the Bobata and your podcast, please. yeah. Hi guys. Hi Vivek. Hi Viru. Viru has given me a very good introduction. I don't think I wear so many hats, but I am also a movie buff like these guys. We have spent numerous hours talking about movie. So when they asked me to join here, it was like another chai pe charcha as we used to do long back. But now chai pe charcha has a different meaning, so I was hesitant to use that word. But we actually coined it well before it became chai pe charcha. Absolutely. So, what did you think about the film? Yeah, I mean, I find it an interesting piece of art because, like I said, I felt when it started that it is similar to any other movie which talks to you about a dream of a child. And in Marathi also, we had seen similar films. There was a movie called De Dakka. I think it was almost 5-7 years back. Okay. And had a similar story where a girl wanted to get into a Lavani contest and win, and due to situation at home, they will not be able to do it, something like that. But as movie went ahead, I felt that there is more depth to the movie than what you see prima facie. Obviously, the director has left a lot of clues for you to figure out what he really wants to tell. It is not a straight narrative, is what I believe in. Yeah, so like you said, I mean, it's just a 1 hour, 14-minute film, so it's not too long. And I think Vivek had a problem with that as well. He probably thought that the film didn't do too much justice to the topic. What did you feel, Vivek? Yeah, so in terms of the timeline, I think it did not give me a feeling of being a long length feature. Neither did it give me a feeling of a short film. It was somewhere in the middle, which was a problem for me because yes, it did introduce me to this unique art form that I didn't know of. But for me, the story was between the father and son, and I think it didn't spend as much time that it should have. So either it could have been longer and we could have had more moments between them, or it could have been the same film but in a shorter runtime where we could have had enough time later to also kind of ponder on the moment. So that was my largely the takeaway when I was watching, but after I watched the film, yeah, about the runtime at least. I found it to be just about right somehow, क्योंकि and I found it entertaining. Like पहले मैं सोच रहा था कि maybe this is also a meandering tale
which I may not like. In fact, मैंने जब उसका प्रोमो देखा तब मुझे it was not too appealing to me. मुझे ऐसा लगा ये आर्ट फॉर्म का कुछ दिखाएंगे, आई विल नॉट प्रॉब्ली रिलेट टू इट, एंड देन आई विल बी बोर्ड और समथिंग लाइक दैट. बट वैसा बिल्कुल भी नहीं था. एक्चुअली वेरी स्वीटली टोल्ड, सिंपल स्टोरी, सिंपली टोल्ड काइंड ऑफ अ थिंग, राइट. उसमें वो बच्चे का स्टार्टिंग से ही मतलब जो पेस वो मेंटेन रहता है. स्कूल में सीन होता है, फटाफट घर पे जाता है, घर पे सीन होता है, फिर वो फटाफट पहुंचता है वहां पे, एंड दिस होल ड्रामा व्हाट हैपेंस in front of the stage as well as what happens backstage. So it kept me entertained throughout, and I didn't feel that neither did I feel कि अच्छा थोड़ा सा और चाहिए और या कम होना चाहिए था. मुझे ओके लगा. मुझे लगा कि ठीक है, चलो उसने एटलीस्ट ऐसा तो नहीं किया कि फिलर डालने के लिए फिलर डाला है, राइट. हम लोग का विवेक, वी हैव टॉक्ड अबाउट अ फ्यू फिल्म्स वेयर वो 2 घंटा बनाने के लिए वो बना है. जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लड रेड स्काई, right, where we felt ki maybe it should have been shorter, right, and they Yeah, added so yeah. many fillers. तो यहाँ पे मुझे ये अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो फिलर्स नहीं डाला है, एंड जितना उसको बोलना था बोला. आई डोंट नो अबाउट इफ ही डिड जस्टिस टू दशावतार. व्हाट डिड यू फील कि वो जो आर्ट फॉर्म पे वो जो करने वाला था, डिड यू फील निखिल कि वो he did enough to actually bring it to light? Like you said, the length of the movie, I am perfectly satisfied with what he has shown. But the when I read the first lines where he talks about the Dashavataram at the start or at the end, art form and bringing it to the light in front of the people, I don't think it is completely justified in the true sense, because there are very subtle hints of the problems which are faced by Dashavataram Right. artists, and the dynamics between them. I mean, though we have been given kind of a green room access or a backstage access, but the dynamics between the artist and actors have been kept. I mean, there could have been more depth on that side. I just wanted to answer to Vivek when he said that he felt that it is a story between a father and a son. I feel that it has more than that. It is a struggle. It also shows struggle of an artist, to settle into the world, and finally to settle to a point. Even the story of Mohini, which is used, I find it quite metaphorically used in that situation. I don't know whether you guys took it or it is just in my head. Okay. But if you see, there are interesting points. The main protagonist once said that when he's making an entry, the couple of bystanders tell that a drunkard has come and now he's going to ruin it. Right. So because of his problem and because of his things, he has given way, or he is giving company to Mohini, which is like liquor or wine or something like that. Correct. Which is actually not good for him. And in the end, his if you see that story, there also that Maharaj is a good person, but is swayed away by Mohini, who is on the bad side. Correct. And who's dragging him down. And finally, his son is the one who saves him. Right. In the story also, the father-son dynamics helps him do that, makes him realize his mistakes by doing that performance, by doing it in front of his son. So son is an enabler for that artist to perform his act. It is a story of father more than son for me. The bait which is used to show his problem is son actually. But the story is about an artist more than a father-son relation for me. My interpretation could be completely wrong, but this is where I am right now after watching. So basically, I watched a couple of interviews, because this was like Amazon Prime was releasing it. They did an interview with the director, and the director is saying that. So basically, the director has had his family for generations have done Dashavatar. और उसके मतलब that is what he's grown up seeing and all, and that is what he wanted to showcase. Like वो artists का struggle, वो लोग का मतलब it's like they say that it's like the first performing art. I don't know if that is true, but that is what the director says. It's like it was the first performing art done 800 years ago, and वो अभी तक चल रहा है, and अभी भी बहुत सारे artists हैं, but obviously
उनको लोग जानते नहीं है. ऑफ कोर्स इन महाराष्ट्र, इन कोंकण एरिया दे आर वेरी फेमस, बट अभी उतना पैसा नहीं है. दे हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, दे हैव टू डू अ फ्यू थिंग्स टू डू इट. लाइक इसमें भी वो गणपति बनाते हैं. ही इज लाइक अ स्कल्प्टर, ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज ऑल्सो एक्टर, राइट, ही इज अ सिंगर. तो वो बंदा है, उसका वो स्टोरी है, उसको वो वही बताना था, एंड ही वांटेड टू ब्रिंग that to life. So yes, his vision was the father, and like you said कि वो जो son जो है, it's just a means to actually bring that story to life. But तूने जैसे बोला ना कि उसने सब मतलब फर्स्ट लेयर पे ही खत्म कर दिया. लाइक ये सब जो तो इंटरप्रिटेशंस बोल रहा है, ये सिर्फ आई थिंक अ फ्यू पीपल माइट अंडरस्टैंड, राइट. जैसे जैसे वो लाइक यू वर सेइंग कि वो ड्रंकर्ड था, इसका और कोई भी ये नहीं है. लाइक देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट इन द फिल्म अदर देन अ फ्लीटिंग डायलॉग बाय अ पर्सन हु एक्चुअली टेक्स अ सेल्फी विद हिम लेटर. मतलब वो थोड़ा मेरे को ऐसा सुपरफिशियल लगा, राइट. कि एकदम से उसको गाली दे रहा है, फिर एकदम से उससे सेल्फी ले लेता है, राइट. वेरी सिंपली डन. फिर उसके बाद वो जो मोहिनी का भी, मतलब उसका भी जो पीछे का जो एक्टर होता है, उसका एरोगेंस दिखाते हैं, एंड देन कंप्लीट यू टर्न इन लाइक 15 मिनट्स. एंड वो जो बीइंग लाइक एन एनेबलर, लाइक जो उसको हु ड्राइव्स हिम, वो भी मेरे को एकदम ऐसे कन्विंसिंग नहीं लगा कि बिकॉज द सन इज देयर, he's risen to the challenge. It was more, I felt कि वो मतलब obviously तभी मुझे ऐसा लग रहा कि वो मोहिनी को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं, तो he's driven by competition rather than the son. तो all of these are there. तो मेरे को वो भी थोड़ा superficial लगा. It would have been a little more. Maybe So Vivek, I what did you was feel? actually put off by interview. Actually, sorry to cut you, but actually I was put off by interviews where he was telling that he wanted to put that art from in front of people. Then I feel that उसने उतना justice नहीं किया है, because मराठी में ही, if you remember, there are movies like Nataranga, which Right. story about problems of Lavani artists and how they face. Right, absolutely. So that does true justice. Yeah, but then that just a true justice to the subject. Here they actually touched upon the subject and moved ahead. So that's where, like Vivek said, story could have been told in a shorter format, or they should have gone in more depth and talked about more Right. about वो मल्टी डायमेंशनल हो सकता था. yeah. जैसे इसमें मतलब वन थिंग दैट ही हैज डन इज द मेन एक्टर्स आर एक्चुअली एक्टर्स. बाकी जो भी हुएवर इज इन द ड्रामा इटसेल्फ, बाकी जो भी दशावतार वाले ड्रामा में उसके साथ रहते हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअल दशावतार आर्टिस्ट which he has gone through. Like he's gone to various troops in Konkan and picked up the best actors for the film itself. तो बाकी सब जो actors है उस play में, they are actual artists from who perform Dashavatari in the Konkan region. In fact, the location also is assumed to be the first place where the Dashavatari started, Lakshmi Keshav temple. So that's where that is where the movie is also shot, and that's where this art form started actually. So now it seems like he's used the art form more than he is matlab he's benefited more than what the art form has. What do you feel, Vivek? Yeah, definitely. Like while you guys were talking about the art form, right? And I was also reading about how this film is so much more about the lost out art form. When I was watching it, that's the problem. When you're watching the film, that doesn't come across so much. For me, the entire film was about the father and son and how they shared this really beautiful bond. But when I hear you guys talk about the art form and that perspective that you guys get after reading or watching an interview, but for me then the experience is very post-mortem, like, you know, that after I watch the film and if I understand things, I feel then it's lost its value, at least in my mind. हाँ, but अगर ये सब we discount कि उसको क्या करना था and all of that, maybe it's like an afterthought. Maybe उसने जो end में डाला, that was like an afterthought, and maybe it was used for promotion of the film. If you just look at it as a film, I had a good experience. I liked the young actor. मस्त था, बहुत pleasant, very cute. उसको देखने में मजा आया.
of course, this was the first film that I watched of Prasad Oak. And I was like, wow, this guy is so good, man. तो वो सब देखने में बहुत मजा आया. All of the performances. In fact, मेरे को वो दशावतार का जो प्ले था, I have never seen it. तो वो देखने में भी उसमें भी मजा आया कैसे किया है कैप्चर. एंड उसका बिहाइंड द सीन्स का छोटा मोटा ग्लिम्सेस जो देखा कि हाउ दे प्रिपेयर, हाउ दे आर लाइक गेटिंग इनटू द होल. मतलब वो लोग का लाइफ का प्रॉब्लम पीछे चल रहा है और फिर बाद में जो बाहर आके उनको फटाक से वही करना है. एंड इट्स सो सेकंड नेचर टू देम that they are not even thinking about the play when they are in the back room, green room, right? वो सोच भी नहीं रहे. अच्छा हाँ मेरे को आगे जाके करना है, बस ये है. तो आई मीन उसमें मेरे को मजा आया. या अरे मतलब मूवी देखने के बाद इट डजंट फील लाइक यू हैव वेस्टेड योर टाइम. इट मेनी टाइम्स हैपेंस विद अस, बट ये देखने के बाद आई वाज स्टिल हैप्पी दैट इट्स अ गुड टेल टू वॉच. Like you said, the actor Prasad Oak is a very good actor. He sometimes wastes his talent, but here he has used it to its Have you seen fullest. any of his films? I have seen him in lots of TV serials also for a long time. अरे ये बंदा he actually won सारेगामापा twice. I don't know how he won it twice. That was actually artist special. अच्छा. सारेगामापा edition. He has won it. He does. अरे मल्टी टैलेंटेड है यार. मतलब ये एक्चुअली वो जो हिमेश रेशमिया का अच्छा वर्जन है ये. He has directed a movie also, if I'm not mistaken. हाँ, he won a national award for directing a movie, यार. कच्चा लींबू. Yeah. So उसका film has won the best film, and I think he won the best director also. So he is a national award winning director who's also an actor, and he almost was like कि I was almost thinking that people have forgotten that I also act, and that is why when the director approached him, जो ये वारंग director है, he was probably a assistant director with Mr. Oak in some other film, और फिर he approached him with the topic, and he was Oak was interested, and he did it. तो मतलब बहुत टाइम के बाद उसको एक्टिंग का मजा आया, and his performance is रियली गुड. मस्त मजा आया. मतलब वो जो दर्द दिखता है कि हाँ मेरे घर में इतना प्रॉब्लम, मेरे को कोई पैसा नहीं देता, राइट? वो आर्टिस्ट है, वो गणपति बनाता है, एंड पीपल कम टू हिम विद डिजाइन्स एंड से कि ऐसा बनाओ, बट दे डोंट इवन गिव हिम अ डाउन पेमेंट. तो उस पे भी वो पहले से पैसे डाल रहा है. उसकी बीवी का सोनोग्राफी है. ही डजंट नो इफ दैट इज गोइंग टू टर्न आउट, कैसे होने वाला है, तो पैसे कैसे होंगे. तो डेली का स्ट्रगल चल रहा है. ऊपर से उसके बेटे का एक ऐसा फुल अनफुलफिल्ड ड्रीम के बारे में भी है प्रॉब्लम. तो ऑल ऑफ दैट लाइक काइंड ऑफ शोज. एंड देन उसका जो ग्राफ है कि हाउ ही देन डज समथिंग रियली गुड ड्यूरिंग दैट, एंड ही मतलब उसको जो एक्टर का जो फीलिंग रहता है वो कैसे वापस आता है. एंड देन ही काइंड ऑफ मोटिवेट्स द टीम अराउंड हिम. एंड वो जो फाइनल भी सीक्वेंस है जहां पे वो उसको ऐसे ही फील्स हैप्पी अबाउट हिज लाइफ. वो छोटा स्मॉल विक्ट्री इन लाइफ, राइट? वो भी उसका कोई बहुत ऐसा विक्ट्री नहीं है, आज का बात प्रॉब्लम निपट गया टाइप का है, बट उसमें भी वो खुशी ले लेता है और वो लोग को दे देता है. तो आई मीन रियली आई लाइक द परफॉर्मेंस अ लॉट. आई थिंक उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाला उसका बेटे का रोल जो किया है, आई थिंक समय तांबे नाम है बच्चे का. He has done a fantastic job also. I mean, his scenes are powerful, and he plays his role very strongly. I mean, अच्छा कैरेक्टर खड़ा किया है लड़के ने उधर. मस्त है. इसमें एकदम एक ईरानियन फिल्म फील आ रहा था ना विवेक? Where's the friend's home? या मतलब वो तो भागते हुए चालू किया एक गांव से दूसरा गांव. तो मुझे लगा ये फिल्म का नाम होना चाहिए था Where's My Father's Play. Nikhil, have you seen that film or have you heard of that film? Where's the friend's home? Very small Iranian. I have heard about it. I have not seen it. So there is one sequence in the film where a little kid has to return a notebook to his friend who lives in a far-off village. So he goes walking all the way, or running actually all the way to that village, trying to find his friend. Couldn't find him. Comes back, then goes back, and like the entire day passes. And the entire film is about this little kid wanting to give that notebook to his school friend, who might get a pasting from his headmaster or the teacher the next day if he doesn't do his homework in that book. It's a beautiful film. You should watch it. Again, like not a very long film, but still it focuses on this one thing, and it is told so well. That particular. और इसमें the parallels were uncanny. मतलब मेरे को पहले चालू हुआ कि पहला सीन ऐसा स्कूल में है,
फिर उसके बाद वो घर जाता है, वहां पे मम्मी रहती है, मम्मी से डिस्कशन है, फिर वहां से वो भागते हुए निकलता है, लाइक वो ग्राफ भी सेम है, और फिर वो भागते हुए जा रहा है सब जगह पे, वहां पे भी ऐसे भागते 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 जाता है, यहाँ पे भी एज अ Yeah, किड यू कीप रनिंग रनिंग yeah. रनिंग, राइट? बट वो जो विजुअल्स है निखिल, स्पेक्टेक्युलर विजुअल्स ना कोंकण का, आई मीन सिनेमाटोग्राफी एंड द होल, मतलब मॉनसून में कोंकण इज समथिंग एल्स मैन. I always envy, and हाँ. there are. I remembered another movie called as Killa. अच्छा. I think the writer of that film is the creative director of this film also. हाँ. Okay. So Killa was shot in Konkan completely in the rainy season, and it's always beautiful. Those frames were fantastic. I mean, that sequence where he runs, each and every frame was like a poster. I mean, you could हाँ. just frame it and put it in your home, as beautiful as that. So Absolutely. In fact, the cinematography, मतलब I don't know, it's मराठी फिल्म में cinematography पे बहुत ध्यान देते हैं. I think it is because they don't have budgets, but वो art direction और वो जो cinematography करते हैं, even घर का sequences सब जो होता है, they take वो उसमें एक they try to bring in some beauty there. But yeah, I mean the natural beauty was like beautiful, amazing, amazing. I think there's some magic in these rural, unknown places. Not unknown actually, but untapped places where people shoot. We are so used to looking at, the metros and how movies are shot in these exotic locations. But I think the moment you go into these smaller villages, which are not seen by us on a day-to-day basis, I think it always kind of makes a complete different experience. और वो बारिश में आहा हा, क्या हाँ मस्त. हाँ हाँ. हाँ, बारिश में तो बहुत ही सही लग रहा था, ग्रीन. या Yeah. और वो स्टार्टिंग में जो स्कूल था, उसमें वो स्टार्टिंग में उसको प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाता है. गाइस, वेयर यू एवर कॉल टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस फॉर समथिंग गुड और बैड? शाबाश करने Always के लिए bad. कभी बुलाया क्या? not Always for bad. good reasons, at least. मेरे को भी याद है, me and my friend did some मस्ती in college, sorry, school, और कुछ 4th 5th स्टैंडर्ड रहेगा, एंड उसके बाद कट टू, बेसिकली उधर भी अगर कट टू करेगा ना, तो हम लोग ऐसा प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बाहर ऐसे नील कर रहे, और हमारे पेरेंट्स अंदर है, और जो फट रही है हम लोग की, मतलब द सस्पेंस इज सो किलिंग कि अभी होने क्या वाला है. अपने से ऐसा ही होता है. प्रिंसिपल ने नहीं बुलाया, और साला 200 रुपया तो कभी नहीं दिया. ये सही में इंडिया में हो सकता है क्या? ये 200 रुपए देने वाले प्रिंसिपल सिर्फ मूवी में होते हैं. ऐसा शाबाश करने के लिए तेरे को नहीं बुलाया. तू तो मतलब ऐसा अच्छा स्टूडेंट रहेगा विवेक की तरह. विवेक होगा रे अच्छा स्टूडेंट. मैं तो, तुझे पता है ना कैसे था, कैसे मैं बोल रहा हूँ, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि मैं ऐसा स्टूडेंट था जो प्रिंसिपल के पास जाता था अच्छे न्यूज के लिए. मुझे हमेशा बुरे न्यूज के लिए बुलाते थे. लाइक डिबेट टीम कैप्टन विवेक, ऐसा नहीं हुआ क्या? हाँ, डिबेट टीम कैप्टन विवेक थोड़ी ना वो लोग प्रिंसिपल के पास बुलाएंगे. वो लोग मेरे बैग से पॉर्न सीडीज निकलती थी और टीचर मुझे भेजते थे सुपरवाइजर के पास. भेजते थे मतलब एक बार हुआ है ये. भेजा था मुझे सुपरवाइजर के पास, और मैं उसको बोल रहा हूँ, और वो सुपरवाइजर को नहीं पता था कि वो सीडी में क्या है. तो ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू पुट इट इन द कंप्यूटर एंड स्टार्ट इट, एंड आई was begging him. I said, okay, this is mine. I agree. You have confiscated it. Call my parents, whatever, but please don't play it. Matlab, don't play it. And thankfully, he did not play it. And he was this pavam guy. Pavam guy. मैं रात के लिए रखता हूँ. नहीं यार, उसने प्ले कर देना चाहिए था स्कूल में, मजा आता था. अरे यार. यू नो व्हाट, उसने तब प्ले नहीं किया होगा ना, तो अभी एक काम करना, उसको मुंबई रेंज करके एक वीडियो भेजना जिसमें वो अजीबोगरीब आवाज आते हैं, वैसे अभी प्ले कर लेगा वो. ASMR भेज देता उसको. ओह मैन, उफ, फन. और निखिल, तेरे पास कोई स्टोरी है? नहीं, मेरी सारी स्टोरी ऐसे होती थी कि मैं शैतानी करता था और फिर मुझे भेजा जाता था. एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे को बोला मैथ्स का सम सॉल्व कर. वहां पे जाने के बाद वो शायद अगले लेक्चर के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैथ्स का टीचर था, और मैंने सम सॉल्व कर दिया. तो इसके लिए उसने मेरे को डांटा कि तेरे को आता है तो फिर क्यों मस्ती करता है. आता है तो मस्ती क्यों करता है? आता है इसलिए तो मस्ती कर रहा हो ना. हाँ, वही तो. वो, हाँ, दैट मेक्स सेंस. दैट मेक्स सेंस.
हमारे इधर तो मतलब प्रिंसिपल ऐसे प्राइमरी सेक्शन में हमारा प्रिंसिपल बहुत अच्छा था. वी यूज्ड टू लाइक रियली लुक फॉरवर्ड टू हिज लेक्चर वगैरह. बट सेकेंडरी वाले में जो थी वो एकदम खतरनाक थी. वी यूज्ड टू ड्रेड कि ये इसको मिलना तो मतलब बैंड बजने वाली है. बट या इट वाज फन टाइम्स. एंड ये पिक्चर देखते समय जब वो एलसीएम और एचसीएफ कर रहा था ना, तो मेरे को पता नहीं मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी. आई वाज लाइक ये स्कूल टाइम हैज लेफ्ट लाइक सम ड्रेड इन माय माइंड. वो पढ़ाई का जो है एंड आई एम फीलिंग कि अभी मैं कैसे पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों को ये सब. यार मेरे को देखकर ही टेंशन होना चालू हो जाता है. मुझे आज भी वीरू रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन के पेपर में फेल हुआ, मैं ये सपना आज भी आता है मेरे को. और दूसरा मेरा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर था, वो मेरा सबमिशन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है बिकॉज माय अटेंडेंस वाज लो. ये सपना मुझे आज भी आता है. तो वो कार छोड़ के जाते ही ऐसे स्कूल की चीजें, कॉलेज की चीजें मन में. एग्जैक्टली वी वर डिस्कसिंग दिस. मैं और विवेक इसी चीज को डिस्कस कर रहे थे ड्यूरिंग लाइक आई थिंक वेयर्स माय फ्रेंड्स होम. वही पिक्चर के टाइम पे वी वर डिस्कसिंग यही स्कूल की बातें. या एंड ये इसने भी वापस वही सब यादें वापस ले आए. So yeah, it was very मतलब I could personally connect to it. I had fun. I mean, it was like a sweet story. It had a sweet, nice ending, a happy ending, which left me with a smile. So I have no regrets with the film. I quite enjoyed it. I don't know why it won the national award, but I think I also don't know exact reason for giving special mention also. मुझे नेशनल अवार्ड का आजकल वो वैल्यू ही नहीं समझ में आता है. जब तुम कंगना रनावत को वो कौन सी पिक्चर घटिया पिक्चर अभी आई थी, उसमें कुछ एक स्पोर्ट्स फिल्म की थी, उसके लिए अगर उसको नेशनल अवार्ड मिलता है तो फिर मैं क्या बोलूं अब. गाइज सैफ अली खान को हम तुम के लिए नेशनल अवार्ड मिला है. तो नेशनल नहीं था रे, नेशनल था क्या सैफ अली खान का हम तुम का? हाँ मैं अभी चेक करके बताता हूँ. आई एम श्योर वो हम होगा. नहीं फिल्म फेयर तो नहीं था. नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर 2005 हम तुम सैफ अली खान. ओह माय गॉड. वीरू का कुछ कनेक्शन निकालो, हम लोग भी नेशनल अवार्ड लेते हैं. इट इज एक्चुअली अ सर्कल. मतलब उधर भी इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट सर्कल यू माइट जस्ट win it again and again and again. At least special mention तो मिल जाए हमें. मतलब कुछ भी हो जाए special mention तो मिल ही जाएगा. I think Cut to Podcast deserves a special mention in national awards. Nikhil is impressed. Are you everyone? If you like, if you think so, support us. Hashtag National Award for Cut to. ये एपिसोड में ये हैशटैग जाना ही चाहिए वीरू. हाँ ये तो जाना ही चाहिए एकदम ऐसे. और मैं ऐसे करते हैं, कंगना रनावत को अपील करते हैं, प्लीज सपोर्ट भारत देश के लिए. वो कर लेगी. एंड देन इतने ट्रोल्स आएंगे कि पूछ मत. वी नीड टू एडिट इट अकॉर्डिंगली विवेक. I already know what we have to cut from this episode. सही है. Oh man, I think we've kind of discussed almost everything we wanted to about the film. And निखिल तू आया तो बहुत मजा भी आया उसमें. डेप्थ में एक एडिशनल जो फ्लेवर तूने जो डाला और तूने जो डेप्थ निकाला फिल्म में, जो मेरे को भी नहीं समझ में आया मतलब पहले, कि दैट पैरेलल बिटवीन द प्ले एंड द एंड वो क्या बोलते हैं, ड्रिंक्स बिकमिंग मोहिनी इन हिज लाइफ. वो वाला पार्ट जो था, आई मीन दैट एडेड लाइक एडिशनल लेयर. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर मैन. थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी. ऐसे मुझे कोई बुलाता नहीं है पॉडकास्ट पे, वैसे भी आप लोगों ने बुलाया. आते रहेगा बॉस, तू आते रहेगा, क्योंकि हम लोग ने पहले से ही 2-3 फिल्म का वो दिखाया था. एक फिल्म जो हम लोग पहले से ढूंढ रहे हैं, तो अगर मिल गई, इफ ऑल ऑफ अस वॉच इट, वी शुड डेफिनेटली डू अनदर वन वेरी सून. Sure, I'll enjoy it. I also love talking with you guys. Vivek, any final thoughts? No, that's it. Thank you, Nikhil, for being here. And guys, please follow us. Please follow us. You can see we are going into different genres. We're going into different languages. Follow us on Spotify, YouTube, Instagram. We're everywhere. And send us your recommendations, man. And you could be the next guest on the show.
and we'll love to discuss the films with you which you recommend to us. So do send in your recommendations as comments and keep listening to us. Like Vivek said, follow us on various channels and let us know what you felt about Picasso as well. All right, bye, 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 Vivek, Bye. Bye. bye, Nikhil. Bye. Bye.